क्या हाल है गाइस? एम आई ऑडिबल? या आई थिंक आई एम परफेक्ट। थोड़ा छोटा सा दिख रहा हूँ मैं। 1 second, गिव मी 1 second. Just welcoming every single one on the day 3. All right. The drop is insane. The drop of numbers of people. Crazy. ये तो होना ही था. Alright. Where did it go? Oh, I cannot find it. All right. कैसे सब लोग guys? We'll start with something new today. आज हम लोगों को एक चीज़ इंट्रोड्यूस करनी है सब लोगों को. बाय द टाइम लाइक वी हिट लाइक 9 PM, in which like we only have 2 minutes. So 2 मिनट लूँगा, ज़्यादा नहीं, 2 से 3 मिनट until everyone joins in. Just setting up environment. If you have not liked the stream, guys, जल्दी से जाओ नीचे से like button दबा दो. Helps the YouTube algorithm, right? All right. Moving forward, guys, want to introduce you to the very interesting product by Sanskriti, which is their Republic of Design. All right. So basically, guys, Sanskriti is just another community like designer, but they have a very interesting product, which is the Republic of Design, which is a design passport. ठीक है. तो बेसिकली जैसे नॉर्मल पासपोर्ट होता है, इट्स जस्ट लाइक अ नॉर्मल रेगुलर पासपोर्ट, बट इट्स अ कलेक्टेबल आइटम फॉर those designers. Before we proceed, just wanna see that if I'm audible clearly or not. Just press one if I am. Where is everyone today? आज कहाँ गए भाई लोग? Crazy, insane. Saturday है ना? सब लोग मस्ती करने गए होंगे. Yeah. All right. Got some ones. All right. ठीक है. So basically guys क्या है ना? आपने एक बार जिसने भी वो करना है, क्या बोलते हैं, आपका डिज़ाइन मीटअप का ये जो हमने देखा था डिज़ाइनर तो 2 दिन में, लास्ट 2 दिन से, उसमें तुम लोगों ने देखा होगा कि एक चीज़ है, एक ऑप्शन है फॉर्म में कि आर यू डू यू हैव द डिज़ाइन पासपोर्ट, येस और नो. तो तुम लोगों ने नो दबाया होगा, तुम लोगों को पता नहीं होगा क्या. तो आज मेरी ड्यूटी ये है, आई विल टेल यू ऑल अबाउट दिस डिज़ाइन पासपोर्ट. सो एक बार आपके पास ये डिज़ाइन पासपोर्ट आ जाता है, यू आर द ट्राइब, यू बिकम द पार्ट ऑफ द ट्राइब ऑफ संस्कृति. ठीक है. एंड ये फिर एक आपका कलेक्टेबल हो जाता है. अब मैं बताता हूँ इस पासपोर्ट की स्पेशलिटी क्या है. ठीक है. पहली चीज़, आपका फर्स्ट पेज पे आपका ये देखो, ये मेरा है, मेरा पासपोर्ट है. मेरी यहाँ पे जैसे नॉर्मल पासपोर्ट के अंदर डिटेल्स लिखी होती है, सारी डिटेल्स यहाँ पे होती हैं, है यहाँ पे ऑलरेडी. एंड फिर यहाँ पे हमारा वो बना हुआ है, एक ट्राइब. अब ये ट्राइब क्या है वो मैं बताता हूँ. ठीक है. तो जैसे यहाँ पे लिखा है, योर DNA, योर कोर आइडेंटिटी, संस्कृति कुछ ऐसे कुछ तो करती है गाइस, जिससे एक एक सेकेंड, वेट, आई कैन नॉट हियर मी, 1 second. हाँ भाई. ऑल राइट, परफेक्ट, नाउ आई कैन. तो इन्होंने ऐसे ट्राइब्स बनाई है. नाउ दे एक्चुअली सर्च अबाउट यू, थोड़ा सा देखते तुम्हारी पर्सनैलिटी को, एंड उसके हिसाब से यू गेट दिस ट्राइब. ऑल राइट. तो ऑल्सो देर इज दिस अमेजिंग थिंग दैट यू कलेक्ट by attending, by meeting amazing mentors. So ये देखो, मैं ये प्रमोद सर से मिला था. We'll call प्रमोद सर tomorrow to talk about his community and his idea about whatever he has planned. And guys, काफ़ी इनोवेटिव चीज़ है कि आप देखो कि मेंटोर जैसे अंश मेहरा हो गया वो, फिर ये है अनिल सिन्हा, इज़ अ वेरी गुड, वेरी फेमस डिज़ाइनर ऑल्सो, एंड बहुत बहुत रिस्पेक्टेबल इंसान है.
देन प्रमोद सर तो खुद ही उन्होंने उनका ही प्रोडक्ट है ये। उन सबके आपको चीज़ें मिलेंगी। अतुल कोला जो फर्स्ट डे पे आए थे, उनका है इसके अंदर, पुनीत सर का है इसके अंदर, सबका है, ठीक है। तो इसमें थोड़े से इंस्ट्रक्शंस है, तो वही मैं आपको बताने वाला हूँ कि क्या क्या है इसके अंदर, राइट। तो जो मैंने एलिमेंट्स की बात करी, ये ट्राइब्स हैं इनकी, ठीक है। तो पहली ये एक ट्राइब है, कौन कौन यहाँ पे वो देखता है, क्या बोलते हैं, डीमन स्लेयर कौन कौन देखता है, प्रेस वन, लेट्स सी, वांट सी कौन कौन डीमन स्लेयर फैन है। हम भाई कितने सारे लोग हैं, तो देखो ना कैसे वो तांजीरो के सर पे वो आ जाता है ना। ये तो काम ही बाद में मैं ये करता हूँ जस्ट आफ्टर दिस प्रेजेंटेशन, ठीक है। तो एक है फ्लेम, विच इज़ फायर, फायर एलिमेंट है, ठीक है। तो एक है वाटर, एक है इसमें एयर, जो मेरा ट्राइब है गाइस, ये देखो, आई हैव द एयर ट्राइब, कितना कितना यूनिक है ना गाइस, एयर ट्राइब है ये। एंड एक है अर्थ एलिमेंट, तो ये चार ट्राइब्स है गाइस। एंड इसके थ्रू, ये पासपोर्ट के थ्रू यू गेट एक्सेस टू डिज़ाइन मीटअप्स, वर्कशॉप्स, मास्टर क्लासेस फ्रॉम संस्कृति, राइट। एंड इसमें बहुत सारी चीज़ होती है, लाइक एक्सक्लूसिव मेंबर्स ओनली इनिशिएटिव्स हैं आगे जाके, ठीक है। फिर पर्सनल मेंटरशिप मिलेगी, देर आर, सी संस्कृति कम्स विद द होल पैकेज, ठीक है। एंड इसके अंदर एक चीज़ और स्पेशल क्या है, एंड द बैक देयर इज अ एनएफसी थिंग अटैच्ड, जिसमें आपसे टैप करोगे तो आपका संस्कृति का ऐप का पॉपअप आएगा, जिसके अंदर आपकी प्रोफाइल खुल जाएगी, वेयर पीपल कैन डायरेक्टली कनेक्ट विद यू, डायरेक्टली आपका फ़ोन नंबर, आपका, आपके सारे सोशल मीडिया अकाउंट, सब कुछ, ठीक है। हाउ टू गेट द पासवर्ड बता दो। एंड देन देर आर कॉइन्स। अब ये कॉइन्स का क्या चीज़ है, ये कॉइन्स को आप रिडीम करोगे टू अटेंड दीज इवेंट्स ऑफ संस्कृति। दिस इज ऑल अबाउट संस्कृति, डिज़ाइनर का इसमें कुछ नहीं, डिज़ाइनर इज जस्ट अ पार्टनर फॉर देम, ठीक है। उसके बाद ये बेसिकली कॉइन्स, एक कॉइन इनका कुछ आई थिंक इक्विवेलेंट है टू हमारा एक्चुअल रुपी जो है वो। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, ये कॉइन्स आप कलेक्ट करते हो बाय मीटिंग न्यू पीपल, बाय अटेंडिंग वर्कशॉप एंड स्टफ लाइक दैट। एंड ये बेसिकली रॉयल्टी सिस्टम है, जिसको आप यूज़ कर सकते हो कॉइन्स को टू अटेंड मोर मीटअप्स, गेट स्वैग्स एक्सेट्रा। तो इसके बाद आपको एक्टिवेट कुछ करना पड़ता है। तो ये देखो पीछे जो आप खरीदोगे या जो आपको मिलेगा, अगर आप कोई भी अटेंड इवेंट करते हो, कोई भी इनका मेजर इवेंट अटेंड करते हो, जैसे अभी डिज़ाइनथॉन आ रहा है, जो भी रजिस्टर करेगा उसको ये पासपोर्ट फ्री में मिलने वाला है, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे पीछे क्यूआर है, तो क्यूआर के थ्रू भी आप इसको एक्टिवेट कर सकते हो, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग, राइट। तो आपका फ़ोन वेरीफाई हो जाएगा, वेरी सिंपल, राइट। तो काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अब वापस आते हैं कि आज का एजेंडा क्या है हमारा। तो आज का एजेंडा गाइस कुछ नहीं, बस बेसिकली एक नई चीज़ सीखना है, विच इज़ पुरानी चीज़ ओनली, विच इज़ फ्रेमर। बट नई चीज़ क्या सीखना है गाइस हमारे को, इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी वेरी इंटरेस्टिंग फ्रेमर इफेक्ट्स, एंड बहुत गोल्डन वाली चीज़ है, बिकॉज काफ़ी ये चीज़ें कोई सिखाता नहीं है फ्रेमर के बारे में, जो आज हम कवर करने वाले हैं। आई थिंक एवरी वन इज सेट, एवरी वन इज रेडी। जिसको ज्वाइन करना था वो आ चुका है। लेट्स बिगिन गाइज, लेट्स वेलकम नीलेश। ऑल राइट, हाय नीलेश, एम आई ऑडिबल? Yeah, yeah, you're audible. You can mute the stream in the background. Yeah. Give me 1 second. Yeah, yeah, yeah. Hi, 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 everyone. परफेक्ट। तो नाउ गाइज नीलेश का स्टेज है अब, ठीक है। आई लीव एज ऑलवेज, हम आते हैं थोड़ी Yeah, देर में, मिलते हैं आपसे, तब तक नीलेश यू कैन इंटरेक्ट विद द ऑडियंस, आई एम हियर, आई एम लिसनिंग, कुछ भी होगा आई एम yeah. हियर, ऑलराइट, ऑल Sure, योर्स। sure, sure. Okay. So, hi, everyone. I hope you're doing great. Baki, you guys can just let me know if I'm audible or not. You can just Yeah, click you are one audible, you are on audible. the chat. Okay. Great, 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 great. So, let's just start with asking people like, what problems do you face on, you can say, Framers or Figma? Any problems, any issues that you face? So, I can tackle it along the way we go. Uh, okay. 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 Splash screen that you use. Okay. Great. Got it. Okay. I'll be taking care of.
the splash screen, I'll be giving you a very small, you can say, quick introduction how you can actually make the splash screen. It's not that difficult. It's very easy. Okay then. So I think we can start with the beginning, that is like the Figma file that we actually see. Okay, I'll share my screen now. Hmm. So is it visible, my screen? Yeah, yeah, it is. It is Okay, perfect. sure. So let's start a new project here. So we'll start with the basic, that is how do you export your Figma file to framers, and in the very like good way. So you can say like it would not be the very best way, but this is how I actually tackled my situation. The situation was everything was getting broken down into like different things when I bring Figma file to my uh, framer. तो उसको उससे कैसे बचना है? So let's just keep the name export, and let's go to the framework Figma. Okay. So let's just make one header, that is home. Make it work. So if you guys have any questions or anything, you can just let me know in the chat. I'll cover it. I'll cover that also. Okay, learn animation to look more creative. Yeah. Okay, so I've put, let's keep the logo here. Auto. Give it the padding of 120. Make it full screen. So whenever you're creating any file or anything, just make it full screen, because when you take your files to Framer, you usually have to put the margins and everything there. So try making it full screen, and do not use any design that is not in auto layout. Guys, by the way, Nilesh is using the new Framer UI, as you can see. So don't confuse it with Yeah, Framer, because it looks really, really similar like Framer. So just giving you all a yeah, brief that we are right now on Figma. ठीक है, अभी फिग्मा पे सर ने बहुत जनरली चीज़ बनाई है. सो व्हाट वी आर स्टार्टिंग विद इज़ बेसिकली कि आपका फिग्मा से अगर आपका फ्रेमर पे लेके आना है डिज़ाइन, तो कैसे करते हो उसको, राइट? तो आई होप एवरी वन इज़ ऑन द hmm, सेम पेज. एंड नीलेश, ऑल ओवर टू यू. yeah, क्वेश्चंस को गाइज बाद में टेक ओवर करेंगे. लेट नीलेश कंप्लीट द होल डेक दैट ही हैज़ प्रिपेयर्ड कि लाइक क्या क्या करने वाले हैं आज. नीलेश सर पूरा अच्छे से वॉक थ्रू करेंगे. थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा. थोड़ा लंबा प्रोसेस होगा ये भी कि कैसे करना है, लेकिन आई गारंटी दैट सीखने को बहुत कुछ मिलने वाला है. तो yeah. या, ऑल द बेस्ट गाइस. Okay, so okay. Now everything is in auto layout. Now what I'll do is, okay. So I think it's at it has copied.
It's here. Okay. Here. Okay. 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 Got it. Got it. Got it. ठीक है. हाँ. Okay. Okay. Sure. 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 ठीक है. हाँ. Okay. Okay. Got it. Got it. ठीक है. Okay. Audible? Yeah. So once you click the copy thing, you can now go to the framers and just paste the normal copy paste it here. Okay. Now you can see uh, my header is here. Okay. Now what I do is I just see it once on the phone. Is it working or not? No, it's not working. The main issue is the overall desktop is not in the auto layout thing. Okay. So to make it responsive, you have to make the whole of the thing in auto layout. So वो कैसे होगा कि यहाँ पर आपको layout का एक panel दिख रहा है. ठीक है. Once you click on the desktop, इस पूरे auto layout वाले को open कर देना है. So it was like this. Now once I click on the plus, now it's in the auto layout. Now this, and always keep this in mind whenever you're creating any frame or anything like this. So it's here. Make it fill. Okay. Now let's see. It's coming on. Yeah. So now see, it automatically got responsive here. I did not have to do anything. And now let's see on the tablet also. Yeah. And now you can adjust like how do you want it on tablet. Okay. 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 Then now you understand like how to export your Figma header to your framer thing. Now नीलेश सर let's एक just बार और वापस से yeah. कवर कर लेते हैं इसको फिग्मा से फ्रेमर पे कैसे लेके आना. Okay, got it. हाँ. ठीक है. So what you do is you build your design like this. Okay. So अभी क्या है इसमें? First thing first, you make this home, about, work and everything, and you put all these things into an auto layout. You adjust the distance that you want to have. Okay. Once this is done, you make your logo here. You put both of them into auto layout. Then this is also done. Now you put the auto layout into auto, not into like any numbers. You put it into auto. Put the margins as per your requirement. Like I'm putting 120. Then but only work in auto layout. Do not go randomly like this and this separately, and you take both of them to framer like this. Do not do like this. Always use auto layout. So now the frame is done. Make it full screen. Just let me know if you guys are getting it, or if I'm going a little fast. You can just let me know. So once your frame is done for the header, you can just go to the plugins part, type Figma to Framer. You'll see the plugin here. You just click on it and see in the bottom like this thing coming like copied 8 layers, and you can just go in your Framer file and you can just paste it here. Yeah. Any you can guys can let me know like any issues you're facing, or it's a very simple step.
So till now your header is done, okay? But now you feel like you want some icons to animate on your header, like the modern things, like there is an about and there is an profile icon and to animate when you hover over it. Okay, so I'll teach you guys how to actually make it. So let's just go to my plugins, bring in profile icon. Let's take it from the materials only. Okay, so let's just say profile. I'll take this icon, make it, and always remember to name your uh, this layers also. So okay, then you call it header, and whenever it comes to header, always make components. Okay, so let's say this is header. You you can now take part of it outside. Okay, so whenever you want to make any of your component, like any of your designer component, just right click and you'll see create component thing. Okay, so let's just name it header. Now, why do we use component is that it makes our life very easy. So like I need to give my header a behavior like the way it will behave on a website, the way it will behave on a mobile, or the way it will behave on a mobile tablet. So let's just name it header for web. Now we'll make a variant and we'll see the dimension of the mobile. So say it's 390. So we'll again go to our assets. We'll see header. We'll make it 390. Okay, and we'll make it this way 390. Now again a variant where we have to see uh, the tablet view also. So the tablet is 810. Let's go to the header panel and get 810 on the right hand side. So this is, let's name it header for mobile, and this is header for tablet. Hmm. So now we have our component of header ready here. Now we can go to our home page and change the component. Take the component from here and paste it on the home page.
Hmm. So here we can actually, so now your header is a component now. So you can just click here, and on the right hand side you'll see you can switch from web to mobile. So I'll just click it. You can see now it has changed. From here you can click on the tab header for tablet, and I think it's this. Yeah, it did it. Okay. So like you guys can let me know like if you are having any issue or anything. You can just let me know if you're not able to follow along. So just let's just give a recap. Like what you have learned from here is how to export your thing to framers, and how to actually make it a component by going on the by clicking on clicking right click and going to the components tab and creating a component. Okay. Now let's just jump into like how do you animate this thing? How do you animate your header? Okay. So let's say I have an about me. Okay. Give it a space of pixels. Then there is work. Okay. Then there is work. नीलेश एक बार Yeah. आप चैट भी पढ़ लेना ना. Okay. या Okay. So you want to know about a little. Okay. Can you once again explain how to create a navigation of the header? So, Amraj, navigation as in like you're asking me like how did I actually exported everything from Figma to Figma or something else? Like, do you have any confusion in terms of making it a component? So basically, overall, what we did here is we made the header. We like just wrote down like whatever we need in the header. Like we need home, we need about, we need work. Okay, and we have put everything into an auto layout. Once everything is in auto layout, I just went to my plugins. After going to plugin, I have typed Figma to framework. Okay. Once this thing is open, once you can see this plugin, you can just click on it. You'll see on the bottom that it's written like 8 layers copy. Now you can just go and paste it on the framework. As soon as you reach frameworks, you can just come here and your so if you have a Windows, you can do Control V, or if you have a Mac, you can just control Command V. So you can just Command V and it's here. Okay. Once you're here, you can just check out your uh, paddings, like how much is the padding. Like if you can see on the right hand side of my screen, there is 120 sites and everything. So you can just recheck your things here. Once you are confirmed, like okay, okay, great. So, okay, yeah, cool. So currently I'm on Framers, okay, and we just copied our header from Figma. Now we are on Framer. I'll just change the color of my. I'll make it a little dark. Okay. Now you would be able to understand the difference. Like the dark one is the Figma and the lighter one is the Framer. Okay. So I have done nothing, but I just copied the header from uh,
Figma and I pasted it here. Okay. Now, once you have confirmed like this is your header and everything is okay, you can just click on like right click on your mouse and create a component of it. Always use a component header, and you can name it like header one. Okay. Now you go to your assets and see like your header is there or not. Once you can see, yeah, the header is here, and make and once you name your header is like this. So you make your variants. So one variant is for the your main website. So name it like that. So so one variant is for the website, one variant is for the mobile, and one variant is for the tablet. And this is required because when you switch your sizes, it it like the frame needs to know like what header to use actually. So as you can see on the right hand side, I have clearly written like header for tablet, and it's a header for tablet. Once I click here, it clearly shows header for mobile, and on the left hand side it shows header for web. Okay. Now let's go back to the Figma file and see how do you animate your icons and things. So I have home, I have go, then I have a home also here. This side, home, bring a home here, home. Also, like Nilesh, can you just tell कि आप ये material symbols कहाँ से लेके आ रहे हो? Okay, okay, Yeah. yeah, great, great. Yeah. So I usually use material symbols if I want to use any icon because the kind of consistency I get there and rest of the modification I can do. So you can just go to the plugins. You can write material symbols. You'll see this tab. Once you go in here, you can just write, I want a home icon. You want it a little rounded. You can select the weight also from here. You want it fill, unfilled. You want the pixel to be 20 or 24. Anything you want, you can just control it from here. Now, let's say I have set like I want 300 of these things. I can just see like whichever icon suits me the best. I'll take it 24 only. Okay. Now, I think this one will do for me for now. Okay. I'll just re-edit it a little. Just take away this thing. I don't need this thing. I'll put it here. Then again, you can go to the plugins. You can go to this, and then there's profile. I'll click on it. Then up work. We have our icons. Paste to replace. Okay. Now we'll replace these things with these. Fingers out here. Nilesh, after this, can we just Yeah. dive deep into the animations part? Yeah. So we are into animations part only. So I'll take it here. Yeah, because all of this is covered in the day one. So let's Yeah. just dive Yeah. deep Yeah. into the animations part. Sure. Take it. So okay. Now we have our okay. Okay. Now you want your home about icons to animate. What you can do is you can just click on the home icon. You can okay. You
You can click on the home thing. Then you can, on the right hand side, you see there is an effect menu here. So you want the animation to be over, like you want the animation to come when you hover over it. The cursor comes over it. So you click on hover. Now you see you can scale it up if you want. Like जब भी कोई hover करे, so what do you want? Do you want it to scale up? You want to rotate? You want to do anything else? You can just select it from here. So let's enlarge it a little so that people actually get to know, like, yes, yes, you are actually going to select this thing. And bottom you can see there is a 3D thing. So here what you can do is there are different axes. So I just want it to rotate a little on the x-axis, then on the y. So it will come like this. Okay. Now I think I want this thing. Yeah, I'm pretty cool with it. So you can even adjust the opacity of the thing, the scale of the thing, the rotation of the thing, anything you want to do. You want to screw it, you want to do an offset of it, you can adjust anything from here. Once you're satisfied, like this is the position you want once anyone hovers over it, you just click on cancel and click on publish preview, and as soon as I scroll, it animates. Can you see it? So now I want ऑल्सो आप ना नीलेश सर एक बार बस चैट से इंटरेक्ट करते रहो बिकॉज वहाँ पे okay, लोग आपका देख रहे हैं. okay, sure. It's Guys, always are you better all able to to follow up? समझ में आया गाइस कैसे एनिमेट करना है कि एक बार सर वापस से समझाए. अगर समझ में आया प्रेस 1, अगर नहीं आया तो वापस से करेंगे. अभी सिर्फ nav बार की जल्दी से एनिमेशन ख़त्म करते हैं, देन विल डाइव डीपर थोड़ा सा. सर आपने जैसे वो okay, पूरा कर रखा है ना, आपके मेन पोर्टफोलियो में कैसे ऊपर से नीचे लेके आना है, कैसे स्लाइड जैसे आप बता रहे थे मेरे को कि स्लाइड okay, स्विच okay. करना है. लेट्स डाइव डीप इनटू दैट साइड बिकॉज आई थिंक Sure, दीज आर sure. वेरी बेसिक्स. ये तो सब लोगों को आता ही है. Yeah. थोड़ा वो वाला है, थोड़ा मज़ा आएगा लोगों को देखने में. या Okay. Okay. So let's dive into that only. Let's make a frame. Let's make 2 frames here. So one frame is, let's make a fill. Height, I usually use height is 700 because of the aspect ratio you see in different laptops. So I usually keep 700 as the frame height. Here, just for an example, we can keep uh, frame and some text. ये तो भाई विल कवर द स्प्लैश स्क्रीन ऑल्सो, डोंट वरी. आफ्टर दिस इज डन वी डू दैट ऑल्सो, डोंट वरी. गाइज हैव थोड़ा सा पेशेंस, सब होगा. रिलैक्स करो थोड़ा, ठीक है. डोंट वरी, एवरीथिंग विल बी कवर्ड. Okay. So I made another frame. Let's keep the size 0. Make it this. And let's make another frame. Make it a little bigger. Okay, so we have multiple frames now, but you want, like, as soon as you go to another frame, there should be some kind of an animation. So what we'll do is we'll click on the frame that we want to animate. So let's say we want to animate this thing. Okay, we'll go to effects. Then there are multiple effects. So there is an effect like appear, there is an effect like hover, press, loop, and drag. And here what we are planning to do is whenever comes to this frame, this thing should animate as soon as you reach on this frame. Okay, so let's say
पहले ये छोटा होना चाहिए था. As soon as you come to this frame, it should get bigger. Okay. So how to do that is like you click on the thing, you go on to effects, you click on appear. So it basically means this animation will occur only when someone appears on it. Someone appears on that frame. Okay. So let's say it's on appear, and the thing is like effect is like, so now you see this panel. So there is, I have selected appear, then the effect is custom, and on custom I can actually adjust like what uh, so what should it behave like when you actually reach to the frame. Okay, so I want this opacity to be full, scale to be enlarged, and it should be a little 3D. So things like that. Okay, so I have given it that effect. So as soon as I reach on this page, hmm, so yeah. So if you want an effect on your next frame, you actually use on scroll. Okay, on scroll. Can you see on scroll here? So you click on scroll, then you choose an effect you want it to look like this. Okay, and just check it once. Yeah, yeah. So there are multiple things here. Okay, so one is appear, on scroll, and layer in view. So I'm actually selecting layer in view. Okay, I have selected like when we are not on the layer, how it should look like, and when we enter the layer, how should it look like. Okay, so when you enter, so it's like, let's make the opacity 0, and when you exit, the opacity is full. Let's just check how it looks like. Okay, so as soon as I go up, there is something. As soon as I come in, the frame comes in. Okay, so I'll give you this tutorial again. You make a frame. Okay, you select this thing, your color. Now you want to animate it. You go to effects panel. You select the appear option. From appear, you can select. Okay, okay, got it. So I'll give you the introduction like from the starting. So you go on to effects. Okay, right from the scroll animation. Can you see this scroll animation? So once you click on the scroll animation, you'll see layer in view. Okay, once you see the layer in view, there are multiple options here. So it's like, when do you want the animation to happen? When someone reaches the middle side of the layer, the top side of the layer, or the bottom side of the layer? Okay, I have selected the middle side of the layer. As soon as someone reaches the middle side of the layer, this animation should happen. Okay, now the third option is you want to replay it, yes or no. So whenever like someone leaves your layer or something, do you want this animation to repeat or not? So I have selected yes, I want to repeat this animation. Now there is a custom animation already presented there. Okay, so there is fade in, scale in the bottom. Multiple animations are there. Even if you do not want to make any custom animation, you can just go in here. Let's say I'm selecting scale in animation. Okay, now everything is selected here. I'll click on preview, and as soon as I reach, see, the animation is working. Okay, again I'll go to animations and change this to flip horizontally. Now I'll just preview it, and I think that animation was really fast. So let's select the fade in animation.
As soon as I reach, see, this is feeding in. Hope you guys can see. So basically what I did is I selected the frame, I went to do animations, I, I selected the frame, I went into effects, I selected the scroll animation from here, then I selected the fade in thing, and it's done. It's very simple. But if you want something to be very custom, so how do you do that? It's like you can see here there's an enter effect and there is an exit effect here. Okay. Okay, so you want to set a time. So it's not possible to set a time to an animation, but the thing is you can actually set an area where like, so it's like you want someone, as soon as someone enters this area, the animation should start. And whenever someone leaves this area, the animation should stop. So it's like that. You can set a particular area where you can. So let's say I'll click on this frame. I'll go into animation. Okay, effects, effects. So let's say, so once someone enters, what should be the effect, and once someone exit, what should be the effect. So this is very simple. So let's say I want it to, I want it to be like this and this. So when someone, yeah, you can actually manage the speed from here. Okay, so I am actually animating everything here. So you can just go here. See, there is a transition thing written here at the bottom. You can just click on it and you can actually select ease in, ease out. Everything is here. You can see the time duration also here. Okay, so you can actually adjust the time here. You want it appear in 2 seconds, 5 seconds, 4 seconds, or anything that you want. You can control it from here. Okay, so section in view now. Okay, section in view basically means you are directing this animation on a particular section. So let's say I want this animation to start. Let's create a frame like this. Okay, and let's layer this frame as second.
frame animation. Okay. Once you have this frame ready, you have given it a name. Go on the right hand side and you'll see at the bottom you'll see a scroll section here. Okay. As soon as you click on scroll section, you give it a name, second frame scroll. Okay. So now you have a scroll section ready. Okay. Now I'll click on it. Again, go to my animation tab, that the animation that we have already built. Okay. I'll choose the scroll section view. Now we can actually see the screen that the frame we actually made. So second frame scroll animation. So I have selected it. Okay. So now what will happen is that the animation will start as soon as my top part of my screen reaches to, see, still now it's not animating, but as soon as I touch it, this thing, see, it animated. Okay. Is this clear? So basically, like, I have given this animation a behavior where it will start only when the top part of my screen touches this box, this view box. And how I actually did that is I created a box, basic frame. I went on my right side panel, I went onto the scroll animation and I selected uh, the scroll animation. I've given it a name, scroll, like second frame scroll. Then I went again to my this thing, my frame. I went onto my animations. Okay. Initially we were in the layer in view. Now we are in the section in view. Okay. From section in view, it asks you like which section you want like this animation to happen. Like which section is that? So you go into the drop down, you select the section, and you select also like when you reach the middle part of the section or anything. So this is how it works. If you have any confusion, because this is one of the most crucial things that you guys will use later on. Okay. So if you guys have any confusion in this, please let me know, because if you do not get this part, you'll be stuck with the animation kind of a thing. That the kind of quality animation you want, you'll be stuck if you do not get this part. Okay. I don't think so. Any confusions are there? You can just type it in if you have any confusion. Okay. Cool. I don't think so. Any confusions are there. Okay. Now let's see like how do you actually make your second. So we have learned about how to animate this part, and now let's see, you want a section to come into, like, you want the section to come fade in. So this section, the third frame, the third section is like this, and you just simply click on it. So you can select up here. Okay. And you want your section to come in a fade in form. Okay. So let's do it once again. So currently you can see there is no animation on the third frame, but we want it to come in a fade in format. So we'll click on the frame, we'll go into the animations effects. We want to click on appear. So as soon as it appears, it should fade in. Okay. So this is the fade in already selected. Now we'll view it. Oh, okay. Okay. So we'll select appear. Again, here also you will be in requirement of select of doing the. Just give me 1 second. Everything is okay. Everything is okay. This should fade in. Yeah. Good. Yeah. Just check it out once. Guys, press 1 if you are able to follow. Yeah.
Just give me 1 second. Because even you guys will face some kind of glitches also in here. Okay, so just give me 1 second. I'll just up here. Okay, I'm scroll. Okay, great. Okay, so yeah. So now you want your next frame to come in some kind of an cool animation. So what you do is you go to effects, you click on appear, you select what kind of animation do you want. So do you want your frame to come as in frame in, or you want it to scale in or something else? So I just want my frame to appear as in like fade in, fade out kind of a situation, animation. So I'll click on fade in. I'll I'll go onto the when do you want it to trigger? So I'll go onto the drop down and I want it as soon as my layer is viewed, this animation should happen. It should fade in, fade out. Okay. So let's say our first frame is simple, and the next frame has this animation where this thing rotates down, and now we have an animation like this where it fades in. Okay, got it? So let's say these tabs are your uh, project tabs. Okay, project one, details, project two, details. Okay, so now we have reached your portfolio thing, and now you want something to animate here also. So as soon as you want, whenever someone hover over your this thing, it should animate. Okay, so I'll just go in here, click on effect, I'll click on hover. Now what do I want? I want it to scale up. Okay, so see there is an opacity tab, and on the bottom on the second panel you can see there is a scale thing and there is a rotate thing. So there are like screw also. You want it to appear like this. Anything you want, everything is here. Okay. So I want it to rotate a little bit on the top side and a little bit on the this side. Okay. And I want to give it a little shadow also to make it look a little 3D and blur the shadow. Make the opacity a little low. Okay. So whatever I've done is all here. Okay, so now I'm happy with the kind of thing I can see. And let's see if that animation is working or not. Okay, this part is working, this part is working, and as soon as I hover over it, this turns into. Okay, so okay, so someone is asking me like they are having problem with the iDrop wala thing. So I'm having trouble using iDrop picker in the framework in how. Okay, so I don't think so any issues are there. So this is how you usually do it. So there's an iPicker, you just click on it, you have it. Okay, so I will give the whatever I've taught now. I'll give an overview of it. We wanted this part to appear a little 3D once we hover over it. So what we do is we click on it, we go to effects. Yeah, I think sometimes Framer like crashes. So what you can do is Yeah. reload again and again, because if you are using it on a browser sucks sometimes. Alright. Yeah. You can also download it on your PC or on your system, whatever you're using, for better responses also. Guys, I hope everyone is able to follow. This thing is very, very interesting, and this can make your static website look amazing. And I think that's the challenge for you all, to just make it alive. This will solve your basics, all right, what Nilesh is teaching.
लेकिन अब एक्सपेरिमेंट सब लोगों को खुद से करना है. There are a lot of Hmm. there are a lot, like there are, I think, over thousands and thousands of combinations that you can try with just animations, right? So I hope everyone is following up. थोड़ा सा कभी कभार चीज़ें ओवरवेलमिंग हो जाती है, आई नो, आई अंडरस्टैंड दैट, बट टेक Hmm. अ डीप ब्रेथ एंड रीस्टार्ट अगेन, राइट? ओवर टू यू, नीलेश. Yeah. So what I thought just now is like you want your car to hover whenever someone hover over it. It should appear in 3D. So what we did is we selected the card, we went on to effects, we clicked on effect, and we selected the hover effect. Okay. Okay, we need such a way that when we hover on one project, two effects become small. Okay. Okay. Okay, okay. I got your point. I got your point. So you want once you hover over something, others fade in. Yeah, we can do that, but the process is quite long for that. So even if I want to explain it now, it won't be very easy. But we can actually do that here. So for Yeah, I now, we think can what we can. Sindhi, you should try it on your own also. If you are still stuck, I think there are a lot of tutorials that can help you, and then you can mix and match stuff here and there. Now it's your customization, right? So we cannot do very specific requirements like yours. We are here Hmm, to teach you the crux of it. All right. Now, Nilesh, I think you hmm. are almost done, or like there's still stuff there. Almost done because the main purpose is like I'm teaching them the basic animation. So Yeah. whatever they're asking is like the cars flowing out, flowing in. Those. If I come into teaching those animation, it'll take 1 hour specific for one kind of an animation because there are multiple behaviors going on. So just the way I have given you one example of this thing where you can actually set scroll frame animation and thing. So when we create a very difficult kind of a animation, there are multiple this scenario kind of a usage. Okay, so if I Also, get into one more thing that you can also teach the guys how to add a yeah, ticker and what is basically a ticker. okay, 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 Yeah. got it. Okay, so basically what you do is you go insert here. Okay, just type it here. Okay, so everything is available here. So you click it, you have a ticker here. Okay, now if you want anything to come in between them, like you want this to animate, you need to create frames. Okay, so let's say frame red, frame blue, black, yellow. Let's say these are the frames and you name it. So basically ticker is useful when you want to showcase the kind of companies you have worked for or the kind of projects, overall projects you have, things like that. So let's say ticker 1, okay, ticker 2, ticker 3, ticker 4. Let's make it a little small. And from here you can actually select. Okay, so once I clicked on it, you can see on the right hand side you have an option called ticker here. Now I can actually click on how many tickers do I want. So I have clicked on this. I have to send ticker 1, then ticker again 1. Okay. So I have selected it. So now you can see all those things are reflecting here. I'll resize it a little. Okay. Now I'll click on ticker and adjust like what gaps do I want, how much padding do I want, and how much speed do I want, and direction I want. Now let's just preview it once. See, it's working here. So you can put your logos here, you can put your names here, the way you have collaborated. You can put your reviews here. So if I want to slow it down, I'll just click on speed and
Let's make it 20%. Okay, and I'll go down and let's see, it's 20%. Okay, now you want uh, okay, yeah, just give me 1 second. गाइस क्लियर है सब लोगों को टिकर कैसे ऐड करते हैं बिकॉज व्हाट अ टिकर डज सो दिस इज़ अ वेरी क्लीन एनिमेशन टू हैव यू कैन ऐड लोगोज सो इसमें आप टेक्स्ट भी डाल सकते हो इसमें आप सब कुछ कर सकते हो वेरी वेरी हेल्पफुल फॉर गुड लुकिंग यू आई जैसे Yeah, नीलेश सर ने बताया कि लाइक द स्पेसिफिक logos that you have worked with this company or like your company is a partner of this. So this can be a really good eye-catching thing to have on your website. Uh, a ticker is used for that itself. There are a lot of other effects as well, but एक session में cover करना बहुत difficult है, right? yeah, yeah, yeah. Now it's all yours to just go and research and Yeah. start implementing. But in, Yeah. basically now I think people have a glim of like how do you animate this part, how do you hover, how do you make a ticker. So basics are these only. Now it's on you like how do you use these basic knowledge and create something of your own. And if you want to insert any, you can say ticker, you want to say carousel or anything, you can just go in here, explore this part. There are many animations, many elements you can use from here. Okay, so forms, icons are there, interactive elements are there. So if you go to interactive, there are multiple interactive elements. You can use sticker, you can use slideshows, carousel, cookie banners, many of the things are there. Okay, so you explore the platform, there are multiple things you can do, but it's just that you will need to work upon things. Yeah, so if anyone wants to know any specific other thing, you can just let me know. I think now we should give the chance to the people now. I think Nilesh to just start Mhm. like implementing stuff on their own because Okay, you can stop sharing Nilesh. okay, sure. Because see, we can go guys all and all and all again and again again. We could have done this for the 10 days. 10 दिन आपको सिर्फ framer सिखा सकते थे, spline सिखा सकते थे, Yeah, right? because one animation takes 1 and 1.5 hour. Yeah, correct. Basically, each. So the thing is, guys, with these workshops, what our main objective is to help you all understand the basics because I think तुम लोगों ने देखा ड्रॉप देखा तुम लोगों ने obviously there are I think over 100 and 200 folks who watch it afterwards 9 बजे कोई फ्री नहीं रहता किसी के लेक्चर्स होते हैं कोई कोई पढ़ाई कर रहा होता है कोई खाना खा रहा होता है सबका अलग अलग वो होते हैं so don't ever feel that the competition is off I will thank Nilesh for actually going deeper and listening to my commands thank you so much Nilesh for Yeah, that I'm sure. गाइस नीलेश का भी आई थिंक फर्स्ट टाइम है लाइव विद सो मेनी पीपल तो नीलेश आपका आई होप एक्सपीरियंस अच्छा रहा होगा Yeah, yeah, एंड गाइस एज अ डिज़ाइनर नीलेश इज़ वेरी वेरी फास्ट तो आपने देखा होगा कि लाइक ही स्टार्टेड जस्ट डिज़ाइनिंग स्टफ एंड एवरीथिंग बट नरेशन तुम लोग देखोगे गाइस कितना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है while you're doing it and that's yeah, where not everyone can become a teacher so yeah, guys respect to Nilesh for doing this with me मैंने उनको एकदम ऑलमोस्ट लाइक एक हफ्ते पहले भी नहीं बताया मैंने लाइक 5 दिन पहले बताया कि लाइक वी आर डूइंग दिस एंड लाइक निलेश सेड लेट्स yeah, डू इट मैन थैंक यू सो मच निलेश फॉर एक्चुअली डूइंग दिस विद मी एंड और फोकस करते हैं गाइज अभी थोड़ा सा फीडबैक कलेक्ट करूंगा तुम लोगों से निलेश यू कैन लीव द स्ट्रीम yeah. यू कैन लीव द Sure. गूगल मीट थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन एंड गाइज ऑल द Thank you so much बेस्ट for having me here. All the best, माई guys. If प्लेजर you guys have any confusion anytime, you can just let me know. या आई इफ यू वांट गाइज आई ऐड निलेश सर इन द व्हाट्सएप ग्रुप ठीक है Nilesh sir, we have almost 500 folks in the WhatsApp Okay, group. There are like over 1,000 participants, but 1,000 में से okay, कुछ लोग ही active हैं. I think approximately 700 लोग active हैं जो कर okay. रहे हैं. तो Great, आपसे great, कोई great. भी डाउट होगा सब लोग पूछ सकते हैं. I'll Yeah. add Nilesh in the WhatsApp group, guys. So you can just let me know and I'll help you guys out. For Chalo. sure. See you. Thank Bye. you, Nilesh. All right, guys. Now अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं पूछना चाहता हूँ इज़ लेना चाहता हूँ बेसिकली एक फीडबैक है तुम्हारी तरफ से नीलेश सर का फर्स्ट टाइम था गाइस तो थोड़ा सा प्रेशर ना कम डाला करो बंदों पे जो ले रहा होता है वो थोड़ा सा घबरा गए आप लोगों के कमेंट्स देख के तो दैट्स वाई ही स्टार्टेड हेजिटेटिंग अ बिट तो बी वेरी वेरी केयरफुल नेक्स्ट टाइम से अदरवाइज आई हैव टू थोड़ा सा ऐड अ लिटिल बोट स्ट्रिक्टनेस ओवर द कमेंट्स एंड मैं हाइड कर दूंगा डायरेक्टली बिकॉज मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता बिकॉज
तुम लोग हमेशा देखना, आई वॉज जस्ट वॉचिंग दिस अनट्रिगर्ड पॉडकास्ट का एपिसोड विद शरण हेगड़े एंड ही सेड अच्छे कमेंट्स पे हमारी आइज नहीं जाती, हमेशा बुरे कमेंट्स पे जाती है, एंड दैट्स रियली ऑब्वियस, लाइक दैट्स हाउ वी आर ट्यून्ड, राइट? कोई 10 में से एक बंदा तुम्हारे को आके कुछ गाली देके जाएगा एंड बाकी 9 लोग आके तुम्हारे को कुछ अच्छा बोल के जाएंगे, तुम वो एक बंदे के बारे में सोचोगे जिसने तुम्हारे को गाली दी थी। क्यों? क्योंकि दिल पे लगती है वो चीज़, है ना? तो थोड़ा सा जो भी लिख रहा था, थोड़ा सा ना देख के लिखा करो, जस्ट अ वार्निंग, बिकॉज तुम खुद देखो, अगर जस्ट पुट योर सेल्फ इन द शूज ऑफ द अदर पर्सन हु इज ऑन द अदर साइड, राइट? यू विल एक्चुअली थिंक अबाउट इट। अगर तुम लोग सच में सोच पाओगे ना, तो तुम लोगों को पता चलेगा यार सच में कितना डिफिकल्ट होता है आके लाइव बोलना, है ना? तो जो भी है, तुम लोगों के कमेंट्स कुछ भी हैं, अभी कोई भी डाउट्स आ रहे, आई एम हियर फॉर कमिंग 10 मिनट्स, एंड एक दो चीज़ें पूछना चाहता हूँ तुम लोगों से, फ्यू थिंग्स हेयर एंड देयर। चीज़ क्या रहती है कि अभी हम लोग, जैसे तुम लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि वी वर ऑन अ चैलेंज, राइट? दिस इज द थर्ड वर्कशॉप, कमिंग फोर्थ वर्कशॉप, गेस करो किसकी हो सकती। चलो, लेट्स सी गाइस, कोई गेसेस? लाइक थोड़ा ऑब्वियसली रैंडम क्वेश्चन है ये, बट बोनस सी, मैंने अनाउंस किया था इससे पिछली वाली वर्कशॉप में। लेट्स सी इफ समवन रिमेंबर्स। ग्राफिक डिजाइनिंग, ओके। ओके ओके, फिर से बिल्डअप। तो बेसिकली गाइस क्या करने वाले हैं अपन नेक्स्ट में? यस अभिषेक, यू आर 110% राइट। We will be diving deep with the graphic designing, and it's your boy, it's your boy coming up, नहीं थोड़ा हरकतें कम, it's your boy coming up with a new workshop called, उसका नाम रखने वाले गाइज अपन नेल्ड इट। नेल्ड इट होता ना, यस हमने कर दिया, नेल्ड इट, वी नेल्ड इट। तो थंबनेल क्रिएशन के ऊपर होगी गाइज वो चीज़, बिकॉज तुम लोगों ने डिज़ाइनर के थंबनेल्स देखे होंगे, सब मैंने डिज़ाइन किए हैं, उससे पहले भी मैंने डिज़ाइन किए बहुत सारे थंबनेल्स। मेरी स्पेशलिटी एज अ डिज़ाइनर इज़ अ थंबनेल। सो wanna press 1 if you have a cracked version or a purchase version of Photoshop. हिंदी में भी कर सकते हैं भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पवन भाई क्या होता है ना, आपको थोड़े थोड़े इंग्लिश वर्ड समझ में आके कनेक्ट कर पाओगे, लेकिन जिसको हिंदी नहीं आती ना, जिसको सिर्फ इंग्लिश आती है, वो हिंदी बाउंसर जाता है, उसको बूमरा बूम बूम बूमरा हो जाता है उसका। ओके, मतलब क्रैक्ड भी होगा तो चलेगा, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे फीचर्स सिखा दूंगा तुम लोगों को। क्रेक चाहिए मुझे क्रैक्ड वर्जन, ओके सिखा देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत ईजी है, मतलब प्रमोट नहीं कर रहा हूँ मैं, बट देर आर वेबसाइट्स भव्या, देर इज गेट इन टू पी सी फॉर विंडोज, मैक के लिए भी हो जाता है। अगर तुम लोग स्टूडेंट्स हो तो तुम लोग को डिस्काउंट मिल जाएगा उस पर, तो यू कैन गेट द होल अडोबी स्वीट विद द ऑल ए आई फीचर्स फॉर ओनली 600, क्योंकि अडोबी ने गाइज अभी प्राइस भी गिराया है बहुत ज़्यादा फॉर एवरी वन, ठीक है? एक चीज़ और जो अब मैं करने वाला हूँ, वो है गिव अवे अनाउंस, अभी नहीं, एक दो घंटे में कर दूंगा, इट्स ऑलमोस्ट रेडी, इट्स ऑलमोस्ट डन। गिव अवे के लिए गाइज थोड़ी सी रिक्वायरमेंट्स होगी। गिव अवे किस बात का है? इट्स द स्प्लाइन। मैंने अभी दो तीन बंदों की ना गाइज अभी स्टोरी देख रहा था जब नीलेश सर कर रहे थे। uh, एक चीज़ पे एग्री करूंगा, नीलेश सर थोड़े से डरे हुए थे, तो इसलिए वो आवाज़ नहीं निकलनी थी ज़्यादा उनकी, बट आई हैव स्टिल रिस्पेक्ट फॉर हिम बिकॉज उन्होंने आके ट्राई किया गाइज, एंड ट्राई करना इज लर्निंग, राइट? जैसे तुम लोग में भी सोचो, 1300 लोग आए रजिस्टर किए, उसमें से 1000 लोग व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आए, उसमें से आई थिंक दो 300 400 लोग हमारे मैसेजेस पढ़ रहे हैं, बाकी 600 को आइडिया ही नहीं है गाइस क्या हो रहा है। ये एक एलिमिनेशन फनल है। थर्ड डे तक आते आते तुम लोग अगर आ चुके हो, एंड लाइक जो भी लोग बाद में देखेंगे स्ट्रीम एंड स्टाफ, वो लोग को भी बोल रहा हूँ मैं, तुम लोग को लिए एक बहुत बड़ा सल्यूट है मेरे पास, बिकॉज गाइज आसान नहीं होता ये करना, बिल्कुल आसान नहीं होता, बिकॉज मेरे को मालूम है कि पुटिंग आउटसाइड, मतलब देयर इज अ कंफर्ट जोन, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल मान के चलो, ये कंफर्ट जोन है मेरा,
ये स्क्वायर मेरा कंफर्ट जोन है, ठीक है, राइट। जब मैं इस स्क्वायर के बाहर जाके खेलने लग जाता हूँ तो वो एक सर्कमफ्रेंस बन जाती है मेरी, एंड आई एम वेरी अनकंफर्टेबल एट दिस पॉइंट। आई रियली वांट कम बैक। हमारी मेंटालिटी ऐसी जाती है, राइट, कि नहीं यार मेरे को वापस आना है ना। मैं म्यूट कर लेता हूँ यहाँ पे। मेरे को वापस जाना है, मेरे से नहीं होने वाला है, बिकॉज प्रॉब्लम आती है कि स्टार्ट कोई भी चीज़ स्टार्ट करना बहुत आसान होता है, कोई भी चीज़ बोलनी बहुत आसान होती है, बट कोई भी चीज़ ए टू जेड करना सबसे डिफिकल्ट। आज हम एप्पल को क्यों जानते हैं, आज हम नाइकी को क्यों जानते हैं गाइस। नाइकी जिसने स्टार्ट किया था, आई थिंक आई फॉरगॉट द नेम, द शू डॉग, फिल नाइट, या फिल नाइट गिव अप मार सकता था कि यार देर आर कितने काफ़ी काफ़ी बड़े बड़े नाम है। एडिडास बहुत डोमिनेटिंग था, कॉन्वर्स बहुत डोमिनेटिंग था उस टाइम पे, राइट। तो अगर नाइकी वाले फिल्म फिल नाइट क्या नाम है इसका, फिल नाइट गिव अप कर देते, मतलब ऑब्वियसली फिल नाइट का आइडिया फिर किसी और ने और ज़्यादा बिल्ड किया, तभी वो नाइकी जानते हैं उसको अपन। इट्स अ कोलैबोरेटिव एफर्ट फॉर एवरीवन, राइट। तुम कोई कंपनी भी अगर कोई काम कर रहे हो, कोई स्कूल के अंदर भी अगर पढ़ रहे हो, कोई कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, अभी कॉलेज एक बंदे की वजह से नहीं चलता, कॉलेज सबकी वजह से चलता है, राइट। तो वो चीज़ भी याद रखो, अपना पर्पस भी याद रखो, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हारे को तुम बनाती है, राइट। तो जो भी आज है यहाँ तक मेरे साथ, पहले तो थैंक यू सो मच। एंड यार पूरी कोशिश कर रहा हूँ यार, पूरी सच में पूरी कोशिश कर रहा हूँ। चाहिए यार एक दिन, मेरी मेरी मेरा सपना है कि मैं 1000 लोग टच करूँ एक दिन, बट होएगा। कीप मैनिफेस्टिंग, मैं तो हमेशा मैनिफेस्ट करता रहता हूँ। ऑब्वियसली मैंने आज ऐसा टर्न आउट एक्सपेक्ट नहीं किया था, थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ अपने आप से, बट चलता है। अप्स एंड डाउन्स आर ऑलवेज द पार्ट ऑफ द जर्नी, एंड दैट्स वेयर मैं हमेशा डेडिकेटेड रहूँगा, एंड मैं ये चैलेंज 6 वर्कशॉप्स का कंप्लीट करके रहूँगा, बिकॉज आग है मेरे अंदर, ठीक है। सब होगा गाइस, सब होगा। मेरे को पता है आप लोग सपोर्ट करते हो मेरे को, एंड डिज़ाइनर पे भरोसा है आपको। बस एक चीज़ कि फीडबैक देने से मना मत करिएगा। मेरे को आप कुछ भी बोलना है, आप प्लीज़ बताएं मेरे को कि वंश यार ये है ये है। तो अभी हम क्या ढूंढ रहे हैं गाइज, अभी हम अपनी एक वेबसाइट बिल्ड कर रहे हैं, तो उसके लिए आई नीड वीडियो टेस्टिमोनियल्स। कोई भी गाइज अगर आना चाहता है एंड अपने बारे में लाइक बताना चाहता है कैसा फील कर रहा है वो, हम लोग एक बहुत अच्छी एक कंपाइल करके एक वीडियो बनाने वाले हैं जो हमारे यूट्यूब पे अपलोड होगी। इट्स लाइक अ ट्रेलर, जैसे मैंने स्टार्ट में दिखाया था, राइट, डे वन पे। उसमें मेरे पास वीडियो कंटेंट नहीं था और लोगों का। आई नीड यू ऑल टू सेंड मी वीडियो। भाई तो ग्रेट है, थैंक यू सो मच पवन भाई, मीन्स अ लॉट। अच्छा लगता है कोई ऐसा बोलता है, तो यू सेव मी, आई वांटेड टू जॉइन। थैंक यू सो मच कशिश फॉर सेइंग दैट, इट मीन्स अ लॉट दैट आई एम एबल टू हेल्प यू सेव मनी, बिकॉज गाइज इन सब टूल वूल सीखने में अपन पैसा खर्च ही नहीं करेंगे गाइज। तुम लोग स्टूडेंट्स हो, तुम लोग लर्न कर रहे हो, तुम मैं खुद स्टूडेंट हूँ, मैं लर्न कर रहा हूँ, मेरे को पता है यार। हम लोगों को नहीं देना है पैसा। हम लोग पैसा तब देंगे जब हमारे को कुछ उससे मिलेगा रिटर्न। इनमें तो तुम्हारे को नॉलेज मिल रहा है, आई थिंक नॉलेज शुड बी वेरी वेरी फ्री। राज प्लीज ड्रॉप द व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक ना फॉर योगेश, या इसी बात पे गाइज अगर कोई भी लाइक वापस से प्रोमो करूंगा, आई नो कोई भी सब्सक्रिप्शन ले सकता है, हमारी मेंबरशिप है यूट्यूब की, कुछ भी जो भी लेना चाहता है। बहुत चीप वाला भी लोगे तो भी मेरे लिए तुम सबसे बड़े बन जाओगे, सारे ही हो बड़े, बट वी नीड सपोर्ट ऑब्वियसली। अकेले नहीं कर सकते, अगर एक रेवोल्यूशन लेके आना है वी नीड द होल आर्मी टू कम टुगेदर टू ब्रिंग रेवोल्यूशन टू मेक भारत द इंडस्ट्री ऑफ डिज़ाइनर्स, टू मेक भारत द डिज़ाइन हब। अरे भाई हाँ भाई मैं हूँ इस कॉल में यार, तो क्यों टेंशन ले रहा है। वंशज इनर फायर इज द रीजन। भाई कोई ना ग्राफ अपना, हाँ अरे वही यार, आई नो ग्राफ्स एंड डाउन होंगे एंड चलेगा। अच्छी बात क्या है ना, मेरे पास मेरी मेरी मेंटालिटी क्या है कि 1000 लोग हाफ हार्टेडली आए कंपेयर टू 50 या 60 लोग 100% वाले आए ना, वो मेरे लिए ज़्यादा वैल्यूएबल है।
ये चीज़ें सीखी है यार, विद टाइम सीखी है, बिकॉज ये ग्राइंड है ना, क्योंकि मैं भी ग्राइंड पे हूँ, तुम लोग भी ग्राइंड पे हो, राइट? तुम लोगों के लिए कुछ एक स्पेसिफिक हुक पॉइंट होगा कि हाँ यार मेरे को ये जीतना है, मेरे को ये स्प्लाइन का ये मिलेगा, मेरे को वर्कशॉप से ये कैश प्राइज मिलेगा, मैं उसको यूज़ कर सकता हूँ टू बाय समथिंग स्पेसिफिकली, टू बाय माई मॉम एंड डैड समथिंग, कुछ भी हो सकता है वो, राइट? तो वो चीज़ लाना बहुत इंपॉर्टेंट है, एंड टू ग्रैब like these deals with these amazing companies that I have was a dream 6 to 7 months ago, and वो आज आ चुकी है वो चीज़ लाइव मेरे पास. Bro, I have Spline partnering up with me. That is really really like कभी सोचा नहीं था यार Spline पार्टनर करेगा आके. रिस्पेक्ट तो है यार फॉर यू ऑल, जो भी सपोर्ट करता है ना, मीन्स अ लॉट. अब जो कमिंग वर्कशॉप आ रही है ना गाइस, उसमें मैं हूँ होस्ट. आई नो मैं बहुत ज़्यादा अलग अलग बातें एकदम से डायरेक्शन इधर से उधर कर रहा हूँ, बट मेरे दिमाग में बहुत कुछ चल रहा है. मेरे को ना वो चाहिए यार, वो मैं लेके रहूँगा, ठीक है? तो ग्राफिक डिज़ाइन वाली जो थंबनेल वाली चीज़ मैं सिखाने वाला हूँ, ठीक है? वो मैं हूँगा, सिर्फ सिर्फ मैं हूँगा. अरे यार यार बात कर रहा हूँ यार, है ना? सिर्फ मैं हूँगा उसमें, एंड मैं तुम लोगों को सिखाऊंगा अच्छा थंबनेल कैसे बनाते हैं, अच्छा थंबनेल कैसे बनाते हैं. प्रेस वन इफ यू आर विद मी, प्रेस वन इफ यू आर फॉलोइंग विद दिस होल वर्कशॉप. अरे हाँ, आई वॉज अबाउट टू टेल यू ऑल, क्या क्या मस्त मस्त चीज़ें बनाई है लोगों ने इस बार. अ, वो देख के मज़ा आ गया भाई, वो बंदा ने पता नहीं कुछ 3D चीज़ बना दी. ओके, शाउट आउट टू मेड बाय हरीश, इसने स्टोरी डाली है अपने वेबसाइट की, ये देखो उसकी वेबसाइट है पीछे. देन शाउट आउट टू प्रभुदा, प्रभुदा लेंका, भाई क्या बनाया है ना ये बंदे ने. गाइस ये देखो इट्स डिजाइनर लिखा है, वेरी नाइस, बट इससे कुछ मिलेगा नहीं तुम्हारे को, प्रॉब्लम स्टेटमेंट के लिए बनाना था. बट लव लव दैट. देन वी हैव योशिता, वाओ, डे 3. योशिता, शाउट आउट टू यू. थैंक यू सो मच गाइस फॉर ऑल द लवली स्टोरीज. ज़्यादा टाइम बर्बाद नहीं करेंगे आपका, समय को सबसे ज़्यादा वैल्यू रखना, बिकॉज समय दे के ही तो पैसा ले रहे हो. इस पॉइंट पे एंड करूंगा, मज़ा आ जाएगा, लोग एकदम बोलेंगे क्या फिलोसफिकल बंदा है, क्या बात है. बाय बाय गाइस. और अरे हाँ हाँ, सॉरी सॉरी, ये पासपोर्ट का तो बताना ही भूल गया. एक्सक्लेमेशन पासपोर्ट डालोगे तो 10% का डिस्काउंट पालोगे. और क्या, आह क्या राइमिंग है. एक्सक्लेमेशन पासपोर्ट डालोगे तो 10% का डिस्काउंट पालोगे. तो वो जाओगे तो तुम लोगों को मिल जाएगा लिंक, उस पर बेसिकली ये पासपोर्ट का प्राइस आई थिंक 1500 रुपीज़ है. बट इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, यू ऑल शुड गो एंड रजिस्टर फॉर द साइंटिफिक डिजाइनथॉन, अगर मुंबई या बैंगलोर में हो तो. अगर नहीं हो, आई एम सो सॉरी. हम आ रहे तुम्हारी एरियाज में, स्टेट्स में, हर जगह आएंगे, टेंशन मतलब. डिजाइनर का ऑफलाइन चैप्टर लॉन्च करने वाला हूँ नेक्स्ट ईयर 2025, बी रेडी. आई एम हियर टू कम एंड डोमिनेट यू ऑल. चलो गाइज बाय बाय, और पकाऊंगा नहीं, ठीक है? ऑल द बेस्ट फॉर दिस वर्कशॉप. यू विल हैव टुमारोज डे एज वेल. कल मैं सोच रहा हूँ कुछ इंटरेस्टिंग करूँगा, कल के लिए रेडी रहना. कल सोच के बताऊंगा क्या करूंगा, ठीक है? बिकॉज आज का दिन थोड़ा ऐसे गया ना एकदम से, बिकॉज कल परसों तरसों मतलब डे 1 ऐसे ग्राफ एकदम हाई, ठीक है, डे 1 ऐसे ऊपर गया, डे 2, डे 3 ऐसे हो गया एकदम से. तो एकदम ये ड्रास्टिक चेंज को हमारे को वापस से थोड़ा ऊपर लेके आना, थोड़ा सा ऊपर, फिर चलेगा मेरे को. आई नीड एटलीस्ट भाई 1000, 1100, 1200 लोगों ने किया है, तो आई थिंक 60 से 100 लोग तो होने चाहिए, जैसे आज ही हैं, और होने चाहिए. But I know a lot of people will watch it again. Okay, I'm overthinking, guys. Bye bye. I'll leave you all. Mehul, yes, you are having time till 15th of July.